I hope they all have joined the meeting room. Miriam, can you confirm if they all are in the meeting room? Yeah, they're joining. I'm Okay, admitting. then we will formally begin with the session. Let's एक set me. 2 मिनट सबर कर लें, जो जो ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट कर लेते हैं. all right. मुझे नहीं दिख रहे तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? I can only see the screen. and I 13 can. 13 हो गए हैं. I think that is a good number and we should begin with the session. कुछ कनेक्टिंग पे हैं अभी. जी, Noor, you can start. Yeah, we can formally begin with the session. और जो join करते जाएंगे तो that will be great. We can allow them in the room. So सबसे पहले तो good evening and assalamu alaikum everyone. We welcome you today in this webinar which is organized by 2 Pakistan मिनट Youth सबर कर लें, जो जो Biodiversity. ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट कर लेते हैं. जी हाशिर. नहीं, मैंने नहीं कहा. Okay, I think your mic is not. Yeah, thank you so much. So everyone, we welcome you in today's session organized by Pakistan Youth Biodiversity Network on the account of World Environment Day. I hope you all have heard about the World Environment Day. Let me know in the chat box if you have already. Uh, Hello, Zakir. Glad to have you here. Let me know that if all of you are familiar with the World Environment Day, so I can give you a bit of context of this day. The people who already have joined in, I hope I'm audible to everyone and you can type it in the chat box that have you ever heard about the World Environment Day or not? Because I have to give you a bit of context of this day. Okay. So this day is officially celebrated by United Nations Environmental Program every 5th June of each year. Every year they assign this day a specific topic. So we celebrate that specific theme and we try to raise awareness on that specific theme. And then it is not just about celebrating it, but also coming up with powerful actions to fulfill that theme. Okay? For this year, the theme is land restoration, desertification, and yes, and Phoenix is saying he's familiar with the World Environment Day. Please rename yourselves in the meeting so I can address you by your names. That will be great to know that who are you and where you're from. So talking about the World Environment Day, the theme for 2024 is land restoration, desertification, and drought resilience. I hope you all know that what is the context of land restoration, desertification, and drought resilience. Because when it comes to us being a part of this land, then the land is the element that sustains life and all forms of biodiversity on this planet Earth, right? It is in coordination with the other elements of the world, just water ho gaya, air ho gaya, and one of them is land. Together they form an ecosystem where we thrive and we survive, right? Without having a land cover, imagine ripping off the forest cover of the earth. So who is going to be affected by that directly? It is going to be us. It is going to be the fauna. It is going to be the flora. Okay? Plants, animals, birds, human beings, us all are supposed to be affected by that. And that is why it is crucial to address this problem. And that is why we are here today celebrating this, so we can put you people, mobilize you people, and put your words into actions for land restoration, combating desertification, and innovating for drought resilience, right? We, as a team, Pakistan Youth Biodiversity Network emerged around 2 to 3 years ago. We run under the United Nations Convention on Biodiversity under a global chapter that is called the GYBN. GYBN matlab Global Youth Biodiversity Network.
where all of the world, all of the youth that is a part of this constituency are working under the biodiversity preservation and conservation, raising awareness about the importance of it. Under this global youth biodiversity network, we have a chapters, we have sort of chapters of different countries. It is like Pakistan Youth Biodiversity Network, India Youth Biodiversity Network, then we have Peru, then we have Colombia, then we have other countries, right? So Pakistan Youth Biodiversity Network was founded by Zakir and Maria. We do have both of them in the meeting today, so that is great. You will know more about them and the work the PYBN has done so far. But this was just to give you a context of who we are and what we do. Okay. I am your host for today's evening. My name is Nurulan, and I'm a part of the Pakistan Youth Biodiversity Network as the district lead for Peshawar. We have Asghar Khan, who is the PYBN lead for the KPK chapter and the Malakand chapter as well. And I would love to call upon the stage Hashir Salim, which is the moderator for today's event, along with me. So, Hashir, could you please give an introduction about yourself? Assalamu alaikum everyone. My name is Hashir Salim and I have recently graduated from disaster management from Peshawar University, and now I'm training with PYBN as a moderator and as a helper also. If you have any type of questions, you can type it in your message and I'll reply you there, and Noor will coordinate with us on the chat. Thank you everyone. Thank you so much. Yep. Just make sure to keep the chat alive. I see a Yes, yes. message from someone who said that she is from Kasser is from Malakand. He's a lecturer in Malaka, chemistry. PYBN, yes. Yes, please type your introductions in the chat box. Also, let me know if this is your first time joining a PYBN session or not, because I am really excited to know about that. How many of you have joined PYBN sessions prior to this, and how much of you are new to PYBN platform? जिनको पहली बार पता चला है कि हाँ PYBN is a youth led organization and they are working on biodiversity preservation and conservation. GYBN team is saying I am new. Nosheen Niaz is from Gilgit. Glad to have you here, Nosheen. You are at the very right place when we talk about the biodiversity preservation and conservation. She is a trainer, PYBN trainer. Glad to know that. Asad Ali is also PYBN trainer. Harshir is also a PYBN trainer. I myself am also a PYBN trainer. Now, moving ahead, I think the slides are not in the full view mode. Laiba Asar from Karachi, Dow University. Wasim is joining for the first time. Aisha is scientific officer at Soil and Water Conservation based in Islamabad. Glad to know about that. Tashmala Mariam from BS Environmental Sciences. Amazing, amazing to have a great pool of people right here. So let me all know that how are you feeling today? How much excited are you about today's webinar, and how much excited are you to learn about today's topic? That is Wasim is environmental coordinator, right? Let me share the. Do you have to share the AHA slides link with them? Yes. Yeah, we will share it. Let me share it in the. Yep. Let me know how much excited are you for today's session. By the way, let me tell you that the topic of our today's session is reviving ecosystems, land restoration, and biodiversity, because we are someone who works for biodiversity preservation and conservation. And on this environmental day, we advocate for restoring the ecosystems which are important for biodiversity survival and protection. Mariam has shared the AHA slides link with you in the chat box. All of you are advised to go on this link. There you will find the AHA slide that you are seeing on the screen. How are you feeling today? वहाँ पे अपने inputs दे and you will see your inputs on the screen. So it is a sort of an interactive activity. It is a live activity. Your answers will be showing on the screen that how much excited are you for today's. So one word for happy, one word for excited.
One word for overwhelmed. Oh my God. I hope that we can cheer you up a bit. 3 words for happy, 3 words for excited, one word for blessed. Yep, blessed to be in a space of Pakistan Youth Biodiversity Network. 4 words for excited. Actually, let me know who voted for the overwhelmed, so I can know your name and I can know why you are overwhelmed, and maybe we can help you with that. 4 people are happy, 4 are excited, one is blessed, and one is overwhelmed. Wasim is also excited. Wasim, have you tried? I am Maria. I'm yes, Maria. You are overwhelmed because you have been doing so much for the PYBN. So yeah, I hope we can cheer you a bit also. Zahida is happy. Zahida, can you use the AHA link and then record your answer there? So it is good to know that most of you are happy and excited for today's event, because we have so much excited coming up. Moving on to the next slide. Rajkumar is happy. Hello, Rajkumar. I feel like we have met somewhere else too, Rajkumar. Okay, what comes to your mind when you hear about biodiversity? जब आप इस लफ्ज को सुनते हैं biodiversity, तो what is the thing that pops up in your mind, or clicks your mind all of a sudden कि हाँ, this is the understanding of biodiversity in my context. So again, go to the AHA slide link that was shared to you above. Maybe let me, Hashir, can you copy paste that again in the chat box for them? So what comes to your mind when you hear the word biodiversity? I see plants, I see insects, I see animals, I see all of us, I see life. Asghar, it is in German language? Hashir? Guys, there might be a problem with the language, but आप लोग अपने जो Hmm. हैं responses वो ऐड करते जाएं, that वो अंग्रेजी में या उर्दू में जिस तरह से भी आप लिखेंगे वैसे ही आएंगे. There is a problem with the language of AHA, so don't worry Okay. about it. No worries. Language is not an issue. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, बस आप इसका आंसर वहां पे पेस्ट कर लें, ठीक है? लाइबा, आई होप दैट हेल्प्स. Insects, water, plants, animals, diverse lives at one place. Life, animals, everyone. I hope we can get more exciting. Water, plants, fungi. I can see fungi, that is great. Wildlife, yes, wildlife, protecting all living. Microorganisms, all life forms, that is great. Fauna, yes, fauna. So yes, flora, I also see flora. Somebody mentioned fauna and then flora. Yes, diversity of living organisms. Yes, Wasim, that is correct. The diversity of all life forms that exist on the planet Earth is what we call biodiversity in short. Okay, बाकी आप सबके responses are quite right. It is flora, it is fauna, it is microorganisms, it is fungi. They all are related to biodiversity. I see many responses coming in. Let's move to the next slide. Life of everything living thing around. Variety of life on Earth from genes to ecosystem. Yes, Ashar, it is the genes that brings the difference in the living organisms. Now let me know which is your favorite animal in Pakistan. Like if I tell you about myself, I am a cat lover. I really love cats. Even I lied to my parents that I will not be having any other pet. But after 7 years, I won't say I ditched them, but yes, they were sleeping, and I brought in a kitten and I raised her. So that is about me. I'm really an animal lover, and I do love keeping pets, parrots, cats, anything. Hashir birds with multiple breeds from them. Aisha birds. I see hedgehog, I see markhor, I see snow leopard, I see Indus dolphin, a very
unique thing, right? We have to preserve and protect Indus dolphins as well. Quail bird, markhor, eagle, Himalayan ibex. Wow. Deers, dogs, parrots, sparrows. It's interesting to see your favorite animals, right? Hyena? Who mentioned that? Hyena? You have a weird taste, but yet every living thing is as important as the other living thing, so I won't judge that. Long-tailed birds. Wow, like a peacock maybe. Parrots, marmot. Yep, long polar bear. Turtle, lizards, lizards. Um, no, sorry, I won't be making any sort of friends with you because I do not like lizards. I am very afraid of them. I see Hashir Singh peacock, macaw, sparrow. Yes. So that will be all. Again, you all have really interesting taste when it comes to favorite animal. Moving on, and also put your responses in the AHA slides. If you don't have the link, then it is yes. Frog. I also see frog. Now let me know, what plant do you think you love the most? Also, it should be with the logical reason, right? If you love it, there must be a reason to that. Hashir has shared the AHA slides. Make sure you put your responses in this very slides. Sarson, is this the Sarsomala plant? Jasmine, neem, wheat, we all eat it. Yes. Rose, Raat ki Rani, that's great. What else? What else? Let me tell you about myself. I really love lavender. They have a great scent, and that scent is also like supposed to medically relax you. Like if you make a tonic out of that, or you make any sort of a scent out of that, and you use that, the lavender essential oil hota hai, right? It is really refreshing and relaxing. So maybe try that too. Hashir is saying cactus. I got a huge variety in cactuses. Maybe you can gift a few cactuses to the PYBN team, and I, Mariam, Maria, Asghar, and Zakir sir would be really appreciative of that. Lavender, rose, jasmine, mustard, white tulips. Yes, tulip. A few of the tulips are provincial flowers as well. Like I know that for KPK, uh, tulip is the provincial flower. Also, for one other province, it is a provincial flower. So tulips are the symbol of our beauty. Let's move on to the next slide. Yes, let's move on to the next slide. Do you think biodiversity and land are linked? You have to state yes. We have to state yes. Yes. Wasim is saying yes. So that I see everybody responding yes, and that you do have an idea of how biodiversity and land are linked. We will further explore this topic in the next slides. Moving on, I will hand over the floor to Mariam, who will be discussing the link about biodiversity and land, and will be talking about the land degradation um, for this webinar. Mariam, I hope you can take it from here. Yeah, thank you Noor for the amazing moderation. So guys, जो आज हम बात करने वाले हैं, we are going to talk about कैसे land degradation और biodiversity are interlinked. So first of all, just to give you a context, कि land degradation और biodiversity along with climate change ये तीन
इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं जिसको हम ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस के अंदर भी कंसिडर करते हैं और जिसको यूनाइटेड नेशंस बहुत सीरियसली लेता है। और ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं हमारे प्लानट के, इनको एक साथ इसको इनकी कन्वेंशंस आई थी 1992 के अंदर। लेकिन लैंड डिग्रेडेशन का बायोडाइवर्सिटी के साथ कैसे लिंक है, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और उसको हम थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स बी वेरी बेसिक। आई नो अ लॉट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम द एनवायरमेंटल बैकग्राउंड, सो उसको बेसिक रखते हुए लेट्स एक्सप्लोर कि लैंड डिग्रेडेशन होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड डिग्रेडेशन हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है लैंड की जिसमें जो लैंड की क्वालिटी है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, और जो प्रोडक्टिविटी है हमारी जो लैंड की, या जो उसकी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, लैंड हमें फूड प्रोवाइड कर रही है, लैंड हमें हैबिटेट दे रही है, या जो भी चीज़ें हमें लैंड प्रोवाइड कर रही है, उसकी उस सर्विस के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं अक्सर, हम एक वो क्रैक्ड इमेजेस वाला, जैसे भी पीछे ये वाली आप इमेज देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन इमेज जो हम लैंड डिग्रेडेशन को डिपिक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई है, इसमें वाटर कंटेंट उतना नहीं रहा, उतना न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं रहा, सो इट कम ऑल कम्स अंडर लैंड डिग्रेडेशन। अब हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन के जो तीन बेसिक कैटेगरीज, इसमें हम तीन बेसिक समझे सिंबल्स हैं या फैक्टर्स है जिसको हम सामने रखते हैं। फर्स्ट है कि हमारे जब लैंड के ऊपर वेजिटेशन, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाए, यानी आइदर उस लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो रही है, आइदर बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रही है, या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इस तरह के जिससे हमारी वेजिटेशन जो है वो खत्म होती जा रही है, तो वो हमारे पास एक लैंड डिग्रेडेशन का पहला फैक्टर है। दूसरा वी हैव सॉइल डिग्रेडेशन, यानी अब हमारे पास ऐसा हो रहा है कि सॉइल जो है वो या तो वो एरोड हो रही है, यानी इतनी बारिशें हो रही हैं कि सॉइल की जो ऊपर की लेयर है वो रन ऑफ में चली गई। एक तो ये सी एक केस हो सकता है। सेकंड, हमारे पास सॉइल में सेलेनाइजेशन हो सकती है, यानी नमकियात इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि सॉइल की जो अपना पोटेंशियल है वो अंडर ओवरशैडो हो जाए। या हमारे पास हमने सॉइल के अंदर क्रॉप्स को इतना ज्यादा लगा लिया कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ओवरऑल डिप्लीट हो गए, तो ये हमारे पास सॉइल डिग्रेडेशन कॉज करती है जो अल्टीमेटली लैंड डिग्रेडेशन की तरफ चला जाता है। देन वी हैव वाटर स्कार्सिटी, जब भी लैंड के अंदर पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, लैंड हमारा ड्राउट की तरफ जाता है, डिजर्टिफिकेशन की तरफ जाता है, तो भी हमारे पास जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका फिनोमेना होता है। और लैंड डिग्रेडेशन, आप आई होप यू नो द थीम ऑफ दिस ईयर, इट इज आवर लैंड आवर फ्यूचर। यानी लैंड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर लैंड सस्टेन करता है, सो वी विल बी एबल टू हैव अ गुड फ्यूचर, एक सस्टेनेबल फ्यूचर जहाँ हमारे पास प्रॉपर फूड होगा, प्रॉपर प्रोसेस करने के लिए काम लैंड होगी, और हर चीज हमारे पास सस्टेनेबल तरीके से प्रेजेंट होगी, बिकॉज इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। सो मूविंग अहेड, I just want you all, Harshit, if you can share this slide link again. I want you all to let me know कि आपको क्या लगता है कि लैंड डिग्रेडेशन का बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है और किस तरह करती है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर, और आप यहाँ पे देख के आंसर कर सकते हो कि अच्छा लैंड डिग्रेडेशन अगर हो रही है तो वो बायोडाइवर्सिटी को इम्पेक्ट कर रही है, तो कैसे कर रही है। ये बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन चूज मल्टीपल, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स, सो लेट मी नो। If you think कि कोई एक option है, just choose one. If you think there are multiple options, choose all, whatever you think. So we have, okay, yeah, reduce resilience to climate change. I totally agree. And it's just a open statement, and you know that all of these are correct. And I just want your opinion, what you think are the most important ones. So if you think that there is one there's one factor that is most important to you, you can choose that one. Or if you think all of them are very important, तो आप सबको choose कर सकते हैं, कोई दो आपको अच्छे लगते हैं तो वो। लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, जब लैंड डिग्रेडेशन की हम बात करते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन का बायोडाइवर्सिटी के साथ बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लैंड डिग्रेड होगी तो हमारे पास हैबिटेट लॉस भी होगा, लैंड डिग्रेड होगी तो हमारी सॉइल भी खराब होगी, इसकी इरोजन भी होगी, प्लस उसकी क्वालिटी भी डिक्लाइन होती जाती है। मोर ओवर हमारे पास जो वाटर साइकिल्स है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा जब भी लैंड डिग्रेड होती है, तो जो लैंड डिग्रेडेशन की तरफ जाती है तो वो इन्वेसिव स्पीशीज को सपोर्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो उस जमीन के ऊपर ऑलरेडी नेटिव एनिमल्स और नेटिव प्लांट्स होते हैं वो पसे पुश चले जाते हैं। मोर ओवर हमारे पास जब लैंड डिग्रेड होती है तो जो कम्युनिटीज होती हैं उनकी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऑल्सो जो हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज है, विच आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, कि क्रॉप प्रोडक्शन है, हमारे पास वाटर रिटेंशन है, या इस तरह की या हैबिटेट प्रोविजन है, जो भी इस तरह की लैंड की सर्विसेज हैं, जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो फ्री में हमें ऑफर करती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है।
So thank you so much for all your answers. And the winner for this poll is habitat loss, which is indeed a very, very, very important factor that should be considered when we think about the linkage between land degradation and biodiversity. We also have few comments. Oh, okay. Yeah, salt level increase, silent Asgar. Thank you so much for the addition. And you have mentioned a lot of other things as well. Thank you, Asgar, for participating. So moving ahead, just as we mentioned, that we have habitat loss. Land degradation leads to a destruction of and fragmentation of habitats. आप हमेशा अक्सर देखते हो कि हमारे पर लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, यानी कहीं पे ऐसा हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो यू विल सी कि एकदम से वहां की जो स्पीशीज हैं, जो वहां पर रहने वाले एनिमल्स हैं, वो कहीं और मूव करना शुरू कर देते हैं और वो उस जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। उनकी डिस्प्लेसमेंट, जो उनका हैबिटेट लॉस की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे पास बहुत सारे जो स्पीशीज है वो मर भी जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो इकोसिस्टम है एज अ होल, वो बहुत डिसरप्ट होता है। सेकेंड, हमारे पास फिशरी रिचनेस कम हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद थे, अब वहां पे हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो गई, यानी हमारी सॉइल क्वालिटी खराब हो रही है, वेजिटेशन कम होती जा रही है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास अब एनिमल्स के लिए फूड और शेल्टर भी कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारी डाइवर्सिटी है स्पीशीज के, जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, वो भी डिक्लाइन की तरफ जाता है। मोर ओवर, जब भी लैंड की क्वालिटी चेंज होती है, तब हमेशा हमारे पास इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जब हमारे पास लैंड क्वालिटी खराब हो रही होती है, सो इट फेवर्स अ लॉट ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज से मतलब है वो स्पीशीज जो कि हमेशा से यहाँ मौजूद नहीं थी, बल्कि बाहर से वो आई। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने आजकल अपनी सिटीज के अंदर, कि हमारे सिटीज में पाम ट्री जो है वो हमारा नेटिव नहीं है, लेकिन अब पाम ट्री को बाहर से लाकर यहाँ पे लगाया गया, तो दैट इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, जो बाहर के फॉरेन एनवायरनमेंट से हमारे नेचुरल पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में लाया गया है। सो ये जो सब चीजें, जब ये जितने भी फिनोमेनाज हैं, ये हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन की तरफ हमें लेकर जाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं, उनका जो हैबिटेट है वो किस तरह से खराब किया जा रहा है। ये ब्लॉगिंग हो रही है, ये हम ह्यूमन बीइंग्स ये कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस डिस्ट्रप्शन इन द एनवायरमेंट ऑफ दोज एनिमल्स, आप देखोगे कि एनिमल्स हमारे पास अपने ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, इनके पास इनका अपना घर नहीं बचता। अगेन द नेक्स्ट पिक्चर टेकिंग अ बिट टाइम टू लोड, बट यू विल सी कि अच्छा, ये अब ये हमारे पास एनिमल, आप देखोगे कि इसका जहां पे ये रह रहा था, वहां पे उसका पूरा लैंड जो है वो बिल्कुल इक्वल कर दिया गया है। पूरा डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे हो चुकी है, एंड नाउ दिस एनिमल हैज नो प्लेस टू हाइड, नो प्लेस टू लिव। So this is how you disturb the habitat. This is how land degradation affects animals. You can see in this picture the polar bear has died because उसका भी habitat यहाँ पे खराब हो चुका है। उसके लिए जो land थी वो हमेशा से आइसी लैंड थी, लेकिन क्योंकि हमने उसको भी खराब कर दिया, सो नाउ द एनिमल्स आर नाउ डोंट हैव एनी स्पेस टू सर्वाइव। सो ये जो सारे फिनोमेना एक साथ हो रहे होते हैं, ये हमारे पास बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। हमें शायद लगता है कि बीइंग ह्यूमन, हम बहुत ज्यादा एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं, और हमें लगता है कि बस ह्यूमंस ही हैं जिनको यहाँ पे रहने का हक है, या ह्यूमंस ही हैं जिनके सारी जरूरियात पूरी होनी चाहिए। बट दिस इज ऑलवेज अ गुड साइकिल ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। कोई भी अगर लिविंग कॉम्पोनेंट नहीं होता, तो बाकी जो लिविंग बीइंग्स है उनका भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सो आई होप थोड़ी बहुत आपकी क्लैरिटी बिल्ड हो गई हो, क्योंकि यूजुअली हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन को बायोडाइवर्सिटी का लिंकेज डेवलप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो इफ यू हैव एनी कमेंट्स ओवर anything I'm sharing, so do let me know in the chat. If you have any question, please let us know in the chat. Also, if you want to say something and you want to add your point, you have something new to add to these slides, please raise your hand and we will make sure that you get the chance to speak. So, moving ahead, let's see the global statistics. So, very horrifying. ग्लोबल स्टैट्स कहते हैं कि हमारे पास जो 3.2 बिलियन लोग हैं, यानी 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है हमारे पास, दिस पॉपुलेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन। यानी इतनी ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा चंक है, इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, वो लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। उसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे पास हर साल $577 बिलियन की जो एनुअल क्रॉप प्रोडक्शन है, वो इस रिस्क पे रहती है कि पोलिनेटर का लॉस हो सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि इस साल हमारे पास इतने $1 बिलियन की वीट प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी, तो हम कहेंगे कि
हमें कोई नहीं पता कि अगले साल इस वीट को सही से उगाने के लिए हमारे पास पॉलिनेटर्स होंगे कि नहीं होंगे। So this is a really alarming situation we have. हमारे पास हर साल इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा चंक जो है वो एट स्टेक होता है। Moreover, जो हमारा 25% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है वो हमारे पास लैंड क्लियरिंग से आता है। यानी हमारे पास जब लैंड डिग्रेडेशन का फिनोमेना होता है तो हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन और लैंड क्लियरिंग का, कि हम जब डिफॉरेस्टेशन शुरू कर देते हैं या हम एक्सेसिव क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और एक जो नेचुरल फ्लोरा होता है उसको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो 25% तक वो ये लैंड जो होता है वो उसका बाइस बनती है। सो नाउ let's watch a video that's a very cool video by WWF, and they have talked about biodiversity loss. Do let me know in chat if you can hear this. We've all seen photos of rainforests destroyed, rivers littered with plastic, news of wildfires and species going extinct. Biodiversity loss may not be happening at our doorstep, but it should hit close to home. Everything on our planet, including us, is interconnected and interdependent. Biodiversity is like a delicate set of bricks or Jenga The video is not playing, Mariam. There's a problem with the video. tower. The more bricks and the more connections between them, the stronger the tower. But when one piece falls, the whole structure can come crashing down. I heard Maria, I guess. वीडियो के साथ कोई प्रॉब्लम है? आपको आवाज नहीं आ रही उसकी? Let me know, Maria. Anyone? Can you hear the video जब मैं प्ले की थी? Mariam, yes, we could hear the video, but it's like Mhm. lagging a lot. वो शायद मेरे ख्याल से वो नहीं हुई सही. Biodiversity. Here's a clue. We often call it something else, nature. We tend to think of nature as forests, oceans, rivers, and mountains, but it's more than that. Nature is the incredible variety of all life on Earth, plants and animals. The iconic panda or redwood tree, microorganisms in our soil, fish in our rivers, corals in our seas. All these species and the spaces they call home make up biodiversity. Losing healthy habitats means losing access to clean air, water, fertile soils, and many other natural resources essential to our survival, livelihoods, and well-being. It also means losing our greatest allies against the climate crisis. Forests, oceans, grasslands, and wetlands absorb greenhouse gases from the atmosphere, while mangroves and coral reefs act as natural defenses against floods and hurricanes. Falling plant and animal populations impacts us too, but it can be harder to see how. Let's start small, literally. We're talking genes. Different combinations of genes cause small variations in appearance, build, and behavior even among members of the same species. Characteristics that can prove beneficial as environments change and new challenges emerge. But as populations drop, so does gene diversity, making species like those we depend on for food and agriculture less adaptable to stresses such as diseases, pests, droughts, and climate change. And when we lose any species, it can spell disaster for countless others. Here's an example. Tiny yet mighty. Bees and other insects play a giant role in creating healthy ecosystems. If we lose insects, we don't only lose our pollinators, we'd lose the birds that feed on them and keep the pests that harm crops and habitats under control. But this domino effect doesn't end on land. Life in water is affected as birds help fertilize coral reefs and other marine ecosystems through nutrients in their droppings.
ecosystems that nourish the fish that over 3 billion people rely on for food and an essential source of protein. But enough of theory. Here's the truth. Right now, we are losing biodiversity at an alarming and unprecedented rate. 500,000 insect species are threatened with extinction. The average population sizes of wildlife have dropped by 68% since 1970. We've already destroyed half of the world's corals and lose forest areas the size of 27 football fields every minute. These aren't just sad statistics. These are sirens. Signs that we need urgent action from communities, businesses, governments, world leaders, and each and every one of us to transform our broken relationship with nature. We are and always will be part of the equation. So now, let's be part of the solution. Everyone for thank you so much everyone for hanging in. So now I would like Maria to take over. So over to you, Maria. Thank you so much, Mariam, and just let me know if you can hear me and see me clearly. Not sure about seeing because I cannot see anyone. But yeah, I can hear you. Okay, all right. Thank you so much, Noor and Hashir, for moderating the session. Thank you so much, Mariam, for giving a very brief insight about land degradation and how it impacts and what could be the causes. So what we always do whenever we talk about the problems, हम जब भी मसले के बारे में बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ना थोड़ा बहुत सोल्यूशन की तरफ भी जाएं, ठीक है, किस तरह से इस मसले का हल निकाला जा सकता है. So there were all the bad news in the very first half hour of the session, and in the second half we will be talking about the solutions कि किस तरह से ये crisis solve हो सकता है. And also I would really like to thank everyone who is here and listening to us and who is here to learn and everything. So Hashir, again I would please request you to share the link for this question. Again we go back to our slides because you always wanted to have it very interactive. I want to hear from you कि आप लोगों को क्या लगता है, हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से ये लैंड डिग्रेडेशन का या जितने भी हमारे मसाइल हैं किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है. तो प्लीज गो टू योर स्लाइड्स, ओपन द लिंक एंड whatever you think, whatever your response is, please do right over there and then we can move further. So we have Laiba, we have Hashir, we have Asghar, we have Bushra, Zakir, Zarak, Asad Ali, Kashmala, Uruj, Raj, Maliha, Babar, Aisha, Malik, Nausheen, all of you guys, where are your responses? Urs, Rafi, Mariam, Zahida, Aisha, Hanif, Kuldeep, Jabbar Ali, Nurulan. I'm really glad to have all of you. Thank you for coming and please now let us know कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह से हम ये जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन का इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं. मेगा स्केल प्लांटेशन बाय टेकिंग मिटिगेशन स्टेप्स, ठीक हो गया. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यस. हॉल डिफॉरेस्टेशन, यस. Strong policy, yes. Good governance, ठीक. Thank you, Zakir. Thank you, Asghar. Sustain a strong policy. हाँ जी बिल्कुल, पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. एंड ऑल्सो थिंक अबाउट योरसेल्फ. अगर मैं ये पूछूं कि आप लोगों का क्या लगता है कि आप इस क्राइसिस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो गिव मी अ फ्यू रिस्पॉन्सेज फॉर दैट एज वेल. ठीक है, रिड्यूस, मैं और आप अर्बनाइजेशन तो रिड्यूस नहीं कर सकते इन सच फाइनेंशियल क्रंच एज वेल, ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक दैट यंग पीपल कैन डू आल्सो, ठीक. ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज व्हाट पीपल विद पावर कैन डू, बट व्हाट वी कैन डू, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी कैन डू? Rajkumar, you have raised your hand, but we are very tight on time. Please write your question or whatever your comments are in the slides or in the chat. I'm really sorry today we don't have time to take inputs from you guys during the session. I'm really sorry about that, but it is what it is today. Reduce urbanization, halt for a strong policy, raising awareness, reduce policy continuation by educating people. Exactly. We can educate or we don't know about this loss. अच्छा ठीक है. अब जब मैंने कहा कि what do you think young people can do, तो many of you have come with के awareness, ठीक है. awareness, education दी जाए community में,
about biodiversity loss, what is it, how is it, sensitize masses. ठीक है, तो अभी हम बात करने चाह रहे हैं कि लैंड को हम किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो about land restoration I will be moving further. Please Mariam, if you can move up to the next slide please. Thank you all for your responses. There is no wrong answer, not wrong response to this. Everything is, we can conduct community initiatives such as tree plantation activities or growing a garden in our city. Yes, so that's true. तो अब हम बात करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने सारों ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक था, और इसके अलावा भी क्या क्या हमारे पास चीजें हैं. ट्री प्लांटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग जो हम कर सकते हैं, जो हमें पता है. ठीक है, कि मैसिव लेवल्स पे हम ट्री प्लांटेशन करें. कोई अगर एक इंसान एक दरख्त लगा सकता है तो वो एक लगाए, कोई 100 लगा सकता है तो वो 100 दरख्त लगाए. ठीक है, और इस तरह के एग्रीकल्चरल सिस्टम्स होने चाहिए जहाँ पे ट्री प्लांटेशन को ऐसी ट्रीज लगाई जाए. और ऑलवेज ऑलवेज जब हम प्लांटेशन की, तो जब भी हम बात करते हैं, मरियम ने भी अभी इन्वेसिव स्पीशीज की बात की, तो व्हेनेवर यू प्लांट प्लीज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, नो व्हिच ट्रीज टू प्लांट एंड वेयर. ठीक है, डू नॉट give somebody a home who does not belong to that place. ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरह के इन्वेसिव स्पीशीज ले आते हैं तो वो आपके जो ऑलरेडी मौजूद है जो इकोसिस्टम, उसको बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है. तो ट्री प्लांटिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इज द फर्स्ट सोल्यूशन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, और आई हैव टॉक्ड अबाउट ब्रीफली. ठीक है, कि आप दरख्त लगा सकते हैं. दरख्त आपका सबसे, हम क्यों कहते हैं कि दरख्त लगाना जरूरी है. ठीक है, दरख्त लगाने से सिर्फ ये नहीं होता, हम कहते हैं कि लैंड रिस्टोर होगा. दरख्त, वी ऑल नो, दे sequester carbon, and carbon is the carbon credits are going to be new currency. ठीक है, अगर आप massive level पे trees लगाते हैं, you have no idea how much financially it's going to benefit you in the very longer run. ठीक है, there are mega projects around tree plantation, and this is as basic as it can be, but tree plantation is going to be another big thing in the next few years. You will see that as well, because it is something very simple, of course not very simple, but again बाकी जितने भी हमारे पास solutions हैं उनके हिसाब से ये बहुत simple है, लेकिन इसके जो effects हैं वो बहुत ज़्यादा, impacts और effects जो हैं वो बहुत longer run में भी जाएंगे, और बहुत immediate तो नहीं, but in the very long run it's gonna we have to restore our ecosystem, and if we want to, we have to plant trees. Next slide, Mariam, please. Exactly, Asghar has said, plant in the right place at the right time, and right time is also very important. ठीक है, जिस वक्त जो दरख्त उगेगा उसके उगने का टाइम है, तभी आपने वो लगाना है, और उसकी फिर प्रॉपर केयर है. ट्री प्लांटिंग इज नॉट दैट सिंपल, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉलो अप फॉर दैट एज वेल. सो ऑल दीज थिंग्स शैल बी कंसिडर्ड. अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर आते हैं. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान, हम सबको पता है, ठीक है, कि हमारी मिट्टी जो है बहुत जरखेज है, हमारा मुल्क जो है बहुत जरखेज है, तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है जो सस्टेनेबल हो. ठीक है, सस्टेनेबल से हम सबको ही पता है कि सस्टेनेबल का क्या मतलब है, कि हम खुद भी यूज कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए भी जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हो इन अ सेंस. तो सस्टेनेबल, और आप लोग हैरान होंगे कि हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स बन के बैठे हैं, इवन दो वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर स्टिल लर्निंग. बट अगर आप एक किसान के पास जाएं तो वो ये सारी चीजें पहले से कर रहे होते हैं, और आप लोगों को बताने का मकसद ये है, यूथ को बताने का मकसद ये है कि अगर किसी को नहीं पता, जस्ट इन केस, ठीक है, बल्कि किसान आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा. किसानों को पता होता है कि हमने गंदम कब लगानी है, गंदम के बाद हमने कौन सी फसल लगानी है, उसके बाद अगली फसल कौन सी लगेगी, जिसकी वजह से जो है आपकी मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट्स बेहतर होंगे. ठीक है, अब उनको ये तो नहीं पता होता कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स बेहतर हो रहे हैं, इज इट मैग्नीशियम, इज इट कैल्शियम, और वट एवर इट इज, नॉट कैल्शियम ऑफ कोर्स, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें चाहिए, जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए. लेकिन उन्हें लेमैन टर्म्स में किसानों को ये चीजें पता होती हैं. ठीक है, सॉरी, आई गेस मरियम का इंटरनेट इशू है, तो आई विल शेयर माई स्क्रीन फॉर द स्लाइड्स, एंड लेट मी नो इफ यू गाइस कैन शेयर सी माई स्क्रीन. Yes, it is visible. Okay. So, I'm sorry, guys. Noor, can you see my screen? I don't know what you can see on my screen. I can see your, yep, now I can see the slides. Sorry, guys.
So anyways, next thing we were going to talk about is agricultural practices. तो जब हमने कहा कि क्रॉप रोटेशन क्या होती है, क्रॉप रोटेशन ये होती है कि आपने ये नहीं करना कि आपने गंदम उतारनी है तो गंदम लगा देनी है दोबारा। और जो लोग पंजाब से हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से आइडिया है कि किस तरह से जो हैं किसान क्रॉप जो है या जो भी वो फसल लगाते हैं उसको बदलते हैं। ठीक है, पहले गंदम लगाएंगे, फिर चना लगाएंगे, उसके बाद कुछ और लगाएंगे और फिर गंदम की बारी आएगी। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर गंदम को जिन न्यूट्रिएंट्स की मिट्टी से जरूरत है, हो सकता है गन्ने को अगला अगर उन्होंने चना लगाया तो चने को उस तरह से ना चाहिए हो, फिर उसके बाद अगर वो मूंगफली लगाना है तो उसको उस तरह से ना चाहिए हो, तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो है वो रीबिल्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद कंजर्वेशन टिलेज। टिलेज का अगर आप लोगों को नहीं पता तो जो खुदाई होती है, ठीक है, या हल चलाना जिसको कहते हैं, तो बहुत ज्यादा गहरा हल नहीं चलाता वैसे भी किसान, ठीक है, ताकि सॉइल डिस्टर्बेंस ना हो ज्यादा और इरोजन भी ना हो, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिट्टी के अंदर ही रहे, इसके लिए कंजर्वेशन टिलेज इज अनदर थिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम सबको पता ही है कि हम सिंथेटिक केमिकल्स ना इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा जो है पेस्टिसाइड्स हैं जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने यही देखा है कि पेस्टिसाइड्स का जो एक बहुत मेजर इश्यूज पेस्टिसाइड्स के साथ रहा है वो यही था कि उन्होंने बहुत से ऐसे परिंदों और ऐसे छोटे छोटे कीड़ों जानवरों को मार दिया था जो उस जमीन के लिए, उस फसल के लिए बहुत जरूरी थे, जो भी लगाने जा रहे हैं किसान या जो भी आप क्रॉप करते हैं। तो everything, because when you talk about an ecosystem, when we talk about biodiversity, every single one, even a small insect, even a small little fly that is flying around crops, that is important, right? So organic farming is also there, and it is also something that is very much important when you talk about sustainable agricultural practices. Now, the next slide is about soil and water conservation. जैसे कि आप सबको पता ही है कि सॉइल एंड वाटर आर द मेन टू रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होते हैं, ऑफ कोर्स अलोंग विद द क्रॉप एंड फर्टिलाइजर्स या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हम यूज करते हैं। लेकिन अगर जैसे मरियम ने बात की लैंड डिग्रेडेशन की, जब हम बात करते हैं और जब हम लैंड डिग्रेडेशन से हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है या लैंड डिग्रेडेशन से जो है हमारे क्रॉप यील्ड जो है इफेक्ट होती है, ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि आपकी सॉइल डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, या आपके पास वहां पे पानी सही तरह से नहीं मौजूद, अगर आपने वहां पे ओवर एक्सप्लॉइट किया वाटर रिसोर्सेज को या सॉइल रिसोर्सेज को इवन, तो आपको जरूरत है ऐसी प्रैक्टिसेस करने की जिससे आप अपना पानी भी बचा सकें और सॉइल को बचा सकें। तो अगर कंट्रोल फ्लोइंग और टेरेसिंग की हम बात करें तो स्पेशली अगर आप लोगों ने देखा हो जो लोग पहाड़ी इलाकों से हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्लोइंग और टेरेसिंग यूज होती है। आपने देखा है कि लेयर्स में जो है एक तो आप लोगों के खेत बने होते हैं, दे आर स्टेप वाइज, राइट, एंड ऑल्सो जो पानी के निकलने का जो रास्ता होता है वो भी इस तरह से होता है कि एफिशिएंट एंड मैक्सिमम यूज ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अगेन दिस इज द प्रैक्टिस दैट इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन एज वेल, ठीक है, कि मिट्टी में जो है पानी ज्यादा से ज्यादा रह जाए, यही ना हो कि एक ही फसल और एक ही जो क्रॉप लगी हुई है, एक ही जो हमारा कह लें कि एक सीजन है उसी में हो जाए और बाकी नेक्स्ट सीजन के लिए या नेक्स्ट क्रॉप के लिए पानी ना हो या प्रॉपर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ना हो। तो ये कंट्रोल फ्लोइंग और टेरेसिंग की जो टेक्निक्स हैं वो यूज की जाती हैं। कवर क्रॉप्स है बेसिकली आप ये कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये है कि मिट्टी जो है खाली पड़ी है, ठीक है, आंधी आएगी, ऊपर वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है ना, अगर हम मिट्टी की लेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फर्टाइल होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो अगर वो बिल्कुल खाली है तो उसमें क्या होगा, बारिश होगी ऊपर वाली लेयर चली जाएगी, अगर अब आंधी चलेगी ऊपर वाली लेयर चली जाएगी, तो इट्स गोना डिस्टर्ब है, ठीक है। तो किसान क्या करते हैं या किसानों को क्या करना चाहिए कि खाली जमीन ना रहने दें, जो आपकी जरी जमीन है उसके अंदर उसको वो कवर कर देते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बहुत मुख्तलिफ, मैंने अक्सर देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो छोटे छोटे आपको लग रहा होता है कि घास ही लगा दें अगर, ठीक है, घास ना लगाएं, कुछ और छोटे छोटे पत्तों के साथ वो एक होती है, उसका नाम मुझे भूल रहा है, जो ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, ताकि आपका जो है सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एफिशिएंट इरिगेशन, आपाशी का ऐसा निजाम होना चाहिए, पानी लगाने का फसलों को ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि आपका पानी जो है मैक्सिमम एफिशिएंटली प्रॉपरली इकोनॉमिकली जो है वो यूज हो रहा हो और जाया ना हो, ठीक है, क्योंकि वाटर इज समथिंग वी ऑल नो दैट एवरीवन नीड्स दैट, humans, crops, fauna that we have, and every single species on Earth, no matter is it human or from a floral or microorganism or whatever, everyone needs water. So we really need to conserve water, and all these practices they help us, you know, conserve water. And this is what I was talking about, contour flowing and terracing. इसमें आप देख लें कि ये जो बीच बीच में हमें नजर आ रहा है ये बेसिकली पानी का रास्ता है, ठीक है, कि यहाँ यहाँ से पानी भी गुजर रहा है, ठीक, ओके।
एंड देन अगेन जब हमने अभी पीछे पोल के अंदर बात की तो सबने यही कहा कि हैबिटेट लॉस जो है, सो अच्छा आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, आई विल सी. Water preservation and make channels, of course. Soil management and wetland restoration, soil, so right, trees, plant period. Okay, all right, all right. We can use techniques like satellite imagery and GIS for land monitoring along with, of course, आपको उस आजकल क्योंकि GIS पे काम कर रहे हैं ना, तो of course ये सारी और ये एडवांस टेक्निक्स हैं, ठीक है. GIS जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको अब GIS is gonna help you a lot as well. Inshallah, we will have you some time and we will see how GIS can be further used to have sustainable practices or everything that we want to do to protect our land. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेस इज हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन. अब हैबिटेट प्रोटेक्शन में क्या होता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन? ठीक है. अब हमने कहा कि हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसके ऊपर घर बनाए जा रहे हैं या उसके अंदर ऊपर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं या इस तरह के जो मसले मसाइल हैं जो बिल्कुल मौजूद हैं इस्लामाबाद जैसे शहर में मौजूद हैं, मीरपुर खास में मौजूद हैं, कराची में भी मौजूद हैं, पूरे पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान सारे हमारे सूबों में मौजूद हैं. ठीक है. तो हम कैसे हैबिटेट को बचा सकते हैं? ठीक है. जब हमें पता है कि कोई हमारे सुनने वाला नहीं है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं. ठीक है. स्पेशली वी नो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि यार देवसाई के ऊपर जो है ब्राउन बियर है तो वी हैव कंसिडर्ड इट अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड वी हैव टोल्ड कि वहाँ पे आप किसी भी किस्म की कोई अर्बन एक्टिविटी या कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कोई भी कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटी नहीं कर सकते. इसी तरह इन इस्लामाबाद वी नो दैट मार्गलाज इज इट्स अ नेशनल पार्क, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया. वहाँ पे आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकते, ऐसी ना घर बना सकते हैं ना जो है आप कोई रिजॉर्ट बना सकते हैं, कुछ भी इस तरह से नहीं कर सकते. तो प्रोटेक्टेड एरियाज हैव देयर प्रॉपर as per IUCN guidelines, they have their proper you can say protocol. ठीक है. और ऐसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और हम क्यों कहते हैं इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेट का हॉटस्पॉट शेयर करो, हॉटस्पॉट का यही मतलब है ना कि एक ही जगह से बहुत से लोग कनेक्ट हो रहे हैं. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि लॉट ऑफ living organisms are living there and we don't know. There can be microorganisms, macroorganisms, there can be plants, animals, mosses, फंगस, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट कैन बी लिविंग ओवर देयर. ठीक है. तो ऐसे इलाकों के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने की जरूरत है. वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए जाएं. अक्सर हम पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में या नेपाल में कहीं पे उन्होंने अभी रिसेंटली कोई डेवलपमेंट की है, सड़क शायद बनाई है लेकिन वहां पे उन्होंने कॉरिडोर्स बनाए. ठीक है. और उसमें ये क्या होता है कि अगर सड़क बनाई जा रही है जंगल के दरमियान तो आफ्टर जैसे हम सड़कों पर पुल बनाते हैं, ठीक है, कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज कि जो लोग पैदल चल रहे हैं वो ये ब्रिज के थ्रू क्रॉस कर सकें. इसी तरह वाइल्ड लाइफ के लिए भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बीच में से जंगल को काट के उनके लिए रास्ता बनाया गया है तो ऊपर पुल बना दिए जाएं कि अगर उन्होंने जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना हो तो दे नो दैट देयर इज अ प्लेस दे कैन क्रॉस फ्रॉम. अगर वो डायरेक्टली सड़क से जाएंगे तो ऐसी जो जंगल के दरमियान सड़कें बनाई जाती हैं वहां पे द कार्स आर एट वेरी हाई स्पीड, तो दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ getting killed. That is the reason why corridors are important, right? And wetlands की restoration, that is also very important क्योंकि wetlands जो हैं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं to conserve the area, to conserve the resources of the area, और वो बहुत सी वाइल्ड लाइफ को habitat प्रोवाइड करते हैं. तो wetlands are very important और उनकी restoration भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो फ्लड कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा हमें पता है. जैसे मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर मैंग्रोव्स की बात होती है. ठीक है. वो उन क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि सैलाब वगैरह सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए, इरोजन से बचने के लिए, एंड दे हैव देयर ओन वेरी यूनिक इकोसिस्टम एज वेल. तो सो टू प्रोटेक्ट दैट वी नीड टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. Sorry Jabbar, abhi I cannot take your comments. Please, if you have anything to say, write it in the comment section. I'm really sorry, we are very tight on time today. Right. And next is policy and governance. हमें पॉलिसी अगर हमें पता हो, मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों को पता होता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हमारे मुल्क के अंदर बायोडाइवर्सिटी के हवाले से कितनी ज़्यादा जो है पॉलिसीज मौजूद हैं. ठीक है. कौन कौन सा माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एक्ट मौजूद है या नहीं, अगर इंडस्ट्री चलनी है तो क्या चीज़ है या नहीं होगी, किस तरह से रेगुलेटर्स ने रेगुलेट करना है, हमें नहीं पता होता. ठीक है. लेकिन ऐसी पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है कि अगर कोई जंगल काट रहा है तो उससे पूछा जाए कि वो किस बुनियाद पे काट रहा है. वो इस जंगल को काट रहा है तो इस जंगल से जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो किस तरह से कहीं और रेप्लिकेट क्या कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है.
अगर कोई जो है बागरा हिल्स नेशनल पार्क में कोई चीज बना रहा है तो क्या उसके पास प्रॉपर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन प्लान मौजूद है या नहीं मौजूद। ऑल दीज थिंग्स दे आर कम अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, और रेगुलेटर्स का काम होता है कि वो किसी भी जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, जो भी दरख्त काट रहा है, उसको बताए कि ओके इफ यू आर डूइंग इट यू नीड टू follow the law that we have, right? And incentives for conservation, ठीक है, जैसे बहुत से लोग इंसेंटिव्स दिए भी जाते हैं बहुत से इलाकों में, बहुत से लोकल इदारे भी जो हैं वो करते हैं इस तरह के। जैसे अभी असर उस दिन भी बता रहे थे कि अगर केपी की बात की जाए तो वहाँ पे जो यंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो यूथ लेड जो हैं आपके जितने भी ग्रुप्स एंड इनिशिएटिव्स उनको इंसेंटिवाइज करते हैं। तो इस तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएं कि गवर्नमेंट हैज पावर। ठीक है, वी डोंट हैव पावर, वी कैन ओनली create education, we can only in or very minimal resources we can do some community work, but on the larger level policy and governance is something that is very important. We need to have regulatory frameworks, we need to have incentives। ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स टू गिव पीपल इंसेंटिव्स कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एजुकेशन, और यही वो एरिया है जहाँ पे PYBN works a lot around this area, local participation, education and awareness and capacity building. And this is the major thing that we do at PYBN as well. And this is the reason why we have people, young people working with us. And we go to the local communities, we go to the local schools, colleges, educational institutes, and we tell people that why biodiversity is important and why it is important to conserve biodiversity, education and awareness and capacity building of youth. Not only youth, but also farmers, land managers, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप फार्मर को बताएं कि आप इतनी आई रिमेम्बर जो मैंने अपनी BS में रिसर्च की थी तो वहां पे हमने देखा था, हमने ठंडियानी का एक इलाका लिया था, वहां पे हमने कहा था कि जितनी किसान जो है फसल के लिए खाद डाल रहा है उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो 10 बोरी डाल रहा है तो शायद उसको 2 बोरियों की जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर कि उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अवेयरनेस प्रोवाइड करना, लैंड जो लोकल फार्मर्स हैं उनको भी बहुत सी चीजें तो उनको पता भी होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज जो आप साइंस से बैकअप करके लेके जाते हो ना अपने डाटा के थ्रू, ठीक है, तो वो आपके लिए उनकी भी जो इल्म है उसमें इजाफा करता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप जाके लोकल लोगों को बताएं कि यार ये मसला है, आप ये अगर ऐसा नहीं करेंगे। और ये ओवर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स वो हमारी बेसिकली वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है इवेंचुअली थ्रू यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप एजुकेट करें, अवेयर करें, लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। सो और इस तरह की ही एक्टिविटीज अगर आप लोगों ने PYBN में हमारी एक्टिविटीज देखते रहते हैं, पाकिस्तानी यूथ बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क, तो वी आर वेरी मच इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। एंड रिसर्च एंड इनोवेशन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च करें हमारी यूनिवर्सिटीज में, व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, व्हेन यू टॉक अबाउट मैनी डिफरेंट universities, so there is a lot of research, but there is this research and industry gap, right? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की रिसर्च की जाए जिसका इम्पैक्ट जो है वो किसान तक पहुंचे जाए, जिसका इम्पैक्ट जो है वो ग्राउंड तक पहुंचे, और हमारे पास ऐसी इन सब प्रैक्टिसेस के ऊपर जो भी मैंने आप लोगों को बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। ठीक है, टू मेक इट इजी, उनके लिए आसान हो समझना, उनको पता हो, उनको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं अगर हम इनके ऊपर, इनमें से 50% के ऊपर भी हम प्रॉपरली अमल कर लें तो हमारा जो लैंड है वो रिस्टोर हो सकता है। अभी भी हमारे पास वी डू हैव होप, बट इफ वी ओनली टॉक अबाउट थिंग्स एंड वी डोंट डू थिंग्स, देन आई डोंट थिंक इफ वी I don't know where we will lead to, but inshallah future is bright and we have young people with us working, and inshallah we will have positive impact, if not today, not tomorrow, maybe in coming years, inshallah. So that is all from my side. Now I will hand it over to Noor to further continue with the presentation and everything. Thank you. Thank you so much, Maria. That was great insights, and I hope the participants can take up a few actions and do them on their behalf. Let's take a group picture ताकि बाद में हम इसको अपने सोशल मीडिया पर लगा सकें। Maria. Yep. So please turn on your cameras, and I see Azhar opening his hand. I guess Zara has also. Yes. Okay, Zarak. Sorry for that. Anis. Turn on your cameras. Taiba, Raj. It's great to see all these beautiful faces. And ये देखो
No worries, Hashir. I think we can take a picture, right? Yes. Give me some time. Acha, also make a post live is doing thumbs up. खाली thumbs ही है. If Maria could confirm that she is taking the pictures, I Yeah, have a I'm taking the pictures. I am the official photographer for Yep. GYBN. So I'm taking the Yep. pictures and I'm seeing the beautiful smiles and so glad to see all the faces जो GYBN के शुरू दिन से हमारे साथ हैं Zara, first Asghar, Vishal and everyone. It's so nice to see your faces after so long. And I'm taking the picture again in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, Maria, sign off. Bye-bye. I would really appreciate if you all can mark your attendance ताकि फिर आपको certificate मिल सके because this is the only way you can get your certificate. So please do Yep. mark So make your sure you attendance. mark your attendance. जिन्होंने नहीं की प्लीज वो मार्क कर लें so that बाद में आपको और GYBN पाकिस्तान की टीम को कोई इशू ना हो. With that, let's wind up the session. Yeah, the very last slide. Archie, do you mind sharing the AHA link again? And then the last thing would be rate your knowledge gain. जब आपने ये session join किया, how much of an information or knowledge you had, and now assessing yourself at the end of the session, how much have you gained from this session? So please put your inputs in the AHA slides link so that we can know. Yes, a lot. Yes, full 5. I can see 4. We can see 4.5. That's an average, right? Well, Yeah, I that's learned an a lot average. yeah, that's an average, but I would say I learned a lot from the participants, especially Azhar sir dropping his messages and sharing his insights and information is really great. On that note, we will wind up this session. It was great to have you all here. Special thanks to Sir Zakir, Sir Asghar, Mariam, and Maria, as always, and Hashir for being there as a moderator. Thank you so much to all of the participants who came here and attended the session. Hope to see you all in PYBN in the near future. So with that, we have formally ended this session. Thank you so much, and Allah Hafiz. Take care of yourself. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz everyone.